Good morning, everyone. Myself, Yogesh Kumar, Assistant Professor, Army Institute of Education, Greater Noida. Today, discuss about classroom communication. First, communication skills definition. First is communication skill is the ability to convey and sharing information to others in an efficient way. Communication that different thinking about and thoughts and share each other. Communication is the basically an act of interaction and sharing emotions and thought with others. Types of communication skills. Communication skills are basically of three types. There are verbal communication, non-verbal, and visual communication. Verbal communication, in this type of communication, the use of words is done. It is a one-to-one type of interaction, or sometimes more than two. Second is non-verbal communication. Is in this type of communication, gestures are used to share information like facial expressions, handle gestures, specifically says body language. The best part about this type of communication in that it speaks in volumes. Third is visual communication. This type of communication uses things, drawing, designing, etc. to convey and share information with others. Different forms of communication that you need to master. The first is the different form of communication can be listed as the listening, reading, speaking, and body language. You need to have the patience and focus to listen and register what your peers are saying. Next is you need to develop the reading habit to say up to date and improve your vocabulary. Then next is you need to have good speaking skills that will help you present your ideas in an effective and efficient way. Next, you need to show good body language and hide your nervousness and show your confidence. The communication is explain your confidence and your command of language and command of skills, listening, speaking, reading, and writing, 4 skill of each language. So communication is the basically depend of your language skills, listening, speaking, reading, and writing. And then helping of the body language is the effective communication. So is the need of effective communication. Next is few effective communication techniques to that help you become an excellent communicators. किस तरीके से हम अच्छे communicators बन सकते हैं, उसके लिए क्या helping हमारे effective tools या techniques हो सकते हैं. First is have a proper body language. यानी आपका effective communication आपको रखना है तो आपका जो body language है उसका एक proper होना चाहिए. Connecting of the words, connective of the sentence, explain your content. Then second is frame your views. आपके जो व्यूज हैं, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, वो एक फ्रेम होने चाहिए, सेंटेंस फ्रेम होने चाहिए, कंटेंट को फ्रेम करते होने चाहिए, जिससे कि लिसनर या रीडर इज दैट अंडरस्टैंड योर व्यू. प्रॉपर फ्रेम में होना चाहिए. नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट टू लिसन. यानी हम किसी भी चीज को लिसन ही नहीं करें बट उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होता है कि जब हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसको इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट भी कर सकते. नेक्स्ट इज गेट टू नाउ योर ऑडियंस बिफोर योर कम्युनिकेट. यानी किस तरीके के ऑडियंस रेडी हैं आपको सुनने के लिए, आपके समझने के लिए, तो उसी वे में आपको अपना कम्युनिकेशन
रेडी करना चाहिए आपको। उस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, वो प्योर पोज वगैरह लेके अब उसको किस तरह से और इफेक्टिव किया जा सकता है, उसमें ऑडियंस के वे पे भी हमें सोचने की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी आपके क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, जिससे लिसनर को वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, उनको वो क्लियर हो सके। देन नेक्स्ट इज ऑलवेज बी होनेस्ट, और अपने का जो भी आपका वर्क है एज ए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज होनेस्टी वे, वो बिल्कुल एकदम सीधा और सरल होना चाहिए, उसमें कोई इफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, that 7C of effective communication is the picture of CU. First is completeness. It should convey all the fact required for learning. And the first C is the completeness. Completeness, it should convey all the facts required for learning. यानी कि कंप्लीटनेस आपकी जो लर्निंग को फैक्ट के रूप में किस तरीके की आपकी चाहिए, आपको का जो कंटेंट है वो कंप्लीट फॉर्म में हो, जिससे आप उसको फैक्चुअल वे में एक्सप्लेन कर सकें, उसको कम्युनिकेट कर सकें। देन नेक्स्ट इज करेक्टनेस, कंसंट्रेशननेस, कंसंट्रेटनेस, इट मीन्स बिगिंग specific, definite of waved rather than being the way. Next is courteous. It means it refers to transmitting genius, commitment and affection. Next is correctness. It means appropriately addressing your intending audience. यानी कि आपकी जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, वो करेक्टनेस होनी चाहिए, जिससे कि उनकी मीनिंग को क्लियर अप्रोप्रिएट वे में हम एड्रेसिंग कर सके। देन नेक्स्ट इज क्लियरिटी, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड कन्वे स्पेसिफिक गोल। जो भी आपका कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, और क्लियर होगा, क्लियरिटी होगी मैसेज में, क्लियरिटी कम्युनिकेशन होता है उतना ही इफेक्टिव होता है अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, इट मीन्स टू कंसिडर द रिसीवर इंटरेस्ट और इमिटेशन। तो कंसिडरेशन होना चाहिए उसमें कि किस तरह की चीजों को रिसीवर के पास इंटरेस्टेड वे में वो ले, उन चीजों को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बट नॉट लिसन द केयरफुली, नॉट इंटरेस्टेड योर कंटेंट या पॉइंट। सो इज द more effective communication is the role of the consideration is listener and speaker both. Consciousness, communications should be done using the least possible word, यानी कि जो आपका कंसियसनेस होना चाहिए, जिस पॉइंट को आप लेके डिस्कस कर रहे हैं उसी को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए हमें उसमें कंसियसनेस लाना है, यानी कि एक listener and speaker each other the point of discussion of consciousness. So is that diagram of clear of the 7C of effective communication. Some important objective questions according help your entrance exam CTE. So first question is in the process of communication, which one of the following is in the chronological order? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फोर आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट हो सकता है? फर्स्ट पॉइंट ए कम्युनिकेशन, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट एंड मैसेज। सेकंड इज medium, communicator,
message receiver effect. Third is communicator message medium receiver effect. And fourth, D is message communicators medium receiver effect. So right answer is C. Right answer is C. Communicator message medium receiver effect. And the first time is communicator's role play, and that convey the message, select of medium, and communicator send the message, receiver receive the message, and after that effect of communication. Okay, that is the process of communication. Next. Next is classroom communication must be. Classroom communication first is teacher centric, student centric, journal centric, textbook centric. Right answer is स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी स्टूडेंट सेंट्रिक। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन का जो हमारा पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी में भी ये भी है कि स्टूडेंट बेस्ड हमारे टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जब हम क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट सेंट्रिक ही हमारा कम्युनिकेशन हो, कंटेंट बेस्ड हो और स्टूडेंट को बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उसको समझे। कम्युनिकेशन ऐसा हमने कम्युनिकेट किया, देन नॉट अंडरस्टैंड ऑफ स्टूडेंट ऑफ understand the content, so not a effective communication, no objectiveful communication। तो इसलिए सदैव always use of the student centric classroom communication। हमें क्लासरूम में स्टूडेंट को सेंटर का मान के ही हमें अपना कम्युनिकेशन कन्वे करना चाहिए। नेक्स्ट, the type of communication that the teacher has in the classroom is terminate as interpersonal, mass communication, group communication, face-to-face communication। The type of communication that the teacher has in the classroom is termed as interpersonal communication, mass communication, group communication, face-to-face communication। That is right answer C। C is right answer, group communication। यानी कि क्लासरूम में जब टीचर क्लासरूम में कम्युनिकेशन के यूज करता है तो दैट इज यूज ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑल स्टूडेंट कम्युनिकेशन ऑफ ईच अदर। तो टीचर के साथ स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, दैट क्लासरूम जो होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी टीचर इंडिविजुअल अगर करता है तब वो इंडिविजुअल फेस टू फेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज फोर्थ, using the central point of the classroom communication as beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as systemizations, problem orientations, ideal protocol, mind mapping।
Right answer is mind mapping. Using the central point of classroom communication as the beginning of dynamic pattern of idea is referred to as systemation, problem orientation, ideal protocol, mind mapping. Mind mapping का is new concept of present time. यानी कि हम क्लासरूम कम्युनिकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया, यानी कि बेस ऑफ द स्टूडेंट उस चीज को किस तरह की आइडियोलॉजी, किस तरह की थॉट्स डेवलप करने हैं, किस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना है, दैट माइंड मैपिंग के बेसिस पे ये हमें असेस भी होता है कि क्या चीज बच्चे को समझ में आया, हमने कम्युनिकेट किया बट नॉट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, सो क्लियर ऑफ द पॉइंट ऑफ माइंड मैपिंग. Next is a teacher select the best option of ensure your effective presence in the classroom. A, use of clear command. B, making aggressive statement. C, adoption of well-established postures. And third is beginning authorization. So right answer is C. Next is classroom communication is the basic of social identity, external intensities based on passivity, group aggressions. So right answer is A, social identity. यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन का बेस जो होता है वो सोशल वे में होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमें उसे देखना होता है कि किस तरीके की कम्युनिकेशन जो सोशल प्लेटफॉर्म पे लैंग्वेजेस यूज होती हैं, बेसिक कंसेप्ट जो कनेक्ट होना चाहिए कि सोशल आइडेंटिटी भी उसकी हो. ऐसा ना हो कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बट नॉट यूज ऑफ द लैंग्वेज या नॉट यूज ऑफ द कंटेंट इन सोशल आइडेंटिटी. Next is when verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in indeterminate message, verbal message, non-verbal message, and aggressive message. Right answer is C, non-verbal message. Non-verbal message. And when verbal and non-verbal message are coordinatory, it is said that most people believe in the non-verbal message. Next is effective communication presupposes non-alignment, domination, passivity, understanding. Effective communication presupposes. So right answer is D, understanding. A good communicator begins his oblique her presentation with a complex questions, non-sequiturs, repetitive phrase, icebreaker. The right answer is icebreaker. जब हम गुड कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो उसमें जो आइस ब्रेकर का रोल होता है एक अच्छे कम्युनिकेशन में कि बीच बीच में स्टूडेंट को आइस ब्रेक करना आवश्यकता होती है और अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं बेस्ट वे में तो उसके लिए ये इफेक्टिव वे में होता है कि अगर हम उस कम्युनिकेशन में आइस ब्रेक करें. देन नेक्स्ट इज द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी एसेशनली बी.
controvert, B empathetic, abstract, non-descriptive. So right answer is B, empathetic. So classroom communication should essentially be the empathetic. Next is video conferencing can be classified as one of the following type of communication: visual one way, audio visual one way, audio visual two way, visual two way. Video conferencing can be classified as one of the following types of communication: right answer is C, audio visual two way communication. Next is All India Radio AIR for broadcasting was named in the year. General awareness question. So you still helping of the general awareness. Some questions, basic frame of this form, your exam. All India Radio AIR for broadcasting was named in the years. So right answer is 1936 B. Right answer is B. Some questions of correlate of general awareness, classroom communication, and all other things. Next is in which language the newspaper have highest circulation? English, Hindi, Bengali, Tamil. In which language the newspapers have highest circulation? Right answer is English, Hindi, Bengali, Tamil. Right answer is B, Hindi. देखिए हिंदी का जो न्यूज़पेपर है वो सबसे ज्यादा सर्कुलर होता है, सबसे ज्यादा रीड किया जाता है, सबसे ज्यादा उसको सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़पेपर है, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, बहुत स्टेट लैंग्वेज, स्टेट टू स्टेट अदर न्यूज़पेपर इज द यूज ऑफ रीडिंग। नेक्स्ट इज 14. Communication with oneself is now as organizational communication, second grapevine communication, interpersonal communication, and intrapersonal communication. So right answer is D, intrapersonal communication. Communication on self is now as intrapersonal communication. Next is in communication, connotative words are explicit, abstract, simple, cultural. Right answer is D, cultural. In communication, connotative words are cultural. In communication, a major barrier to receptions of message is audience attitude, audience knowledge, audience education, audience income. Right answer is A, audience attitude. Audience attitude. In
communication a major barriers to reception of message in message is audience attitude. Next, in communication, the language is non-verbal code, the verbal code, symbolic code, iconic code. Right answer is the verbal code. यानी जब लैंग्वेज को हम राइट करते हैं, लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तो वर्बली वे में ही उसको हम कोड करके शाब्दिक रूप में लिखते हैं. और लैंग्वेज को राइट करने के लिए, उसको वर्बली करने के लिए कोड जो होता है, कोडिंग करना, डिकोडिंग करना, कोडिंग करता है सेंडर और डिकोडिंग रिसीवर. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग: सोर्स, चैनल्स, मैसेज, रिसीवर. बी सोर्स, रिसीवर, चैनल, मैसेज. सी सोर्स, मैसेज, रिसीवर, चैनल. D source, message, channel and receiver. Before the question discuss about the process of communication, so that same questions is identify the correct sequence of the following question. Right answer is D. Source, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. यानी कि जब कम्युनिकेशन को हमें कहीं आइडेंटिफाई करना है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है, कंटेंट किस वे में है, सेंटेंस किस वे में है, जो वर्ड है वो उस चीज को जिसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप उसको समझ पा रहे हैं, तो सोर्सेज इज द फर्स्ट पार्ट. कहाँ से सोर्स है, कहाँ स्रोत क्या होते हैं, उसको बिगिनिंग कहाँ से हुआ है, स्टार्टिंग द, जैसे रूट वर्ड बेसिकली वन वर्ड ऑफ डिफरेंट फॉर्म, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, सिनोनिम्स वर्ड्स, बट डिफरेंट वे में वो एडजेक्टिव फॉर्म में, वो एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं. बट रूट वर्ड इज द बेसिकली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो बेसिक वर्ड होता है उसी से वो एडजेक्टिव, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड अदर फॉर्म में हम यूज ऑफ इन कम्युनिकेशन. सो सोर्स that convey of the message, selected of the channel and send the receiver, send the message to receiver. रिसीवर को भेज दिया जाता है. तो वो सारी चीजें एक कनेक्टिविटी के साथ चलती हैं. यहाँ पे भी वही है कि सोर्स आपके पास क्या है, फिर उस सोर्स के राइट अपने मैसेज को लिखा, राइट किया, देन सेलेक्ट ऑफ द चैनल, थ्रू ऑफ द चैनल एंड सेंड टू रिसीवर. Next is in communication chatting. In interested is verbal communication, non-verbal communication, parallel communication, Grapewine communication. Right answer is C, parallel communication. यानी दो लोग एक साथ पैरेलल उस पे कम्युनिकेशन करते हैं. देन जैसे हम व्हाट्सएप चैटिंग होता है, फेसबुक पे होता है, बहुत सारी चीजें जो पैरेलल कम्युनिकेशन को शो करती हैं कि दोनों साइड से आप कन्वे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द chronological order of non-verbal communication is sign, symbols, codes, colors. B is the symbols, codes, sign, colors. Color, sign, code, symbols, and D is codes, colors, symbols, and signs. Right answer is the chronological order of non-verbal communication is A, sign, symbols, codes, color. यानी कि जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बेसिकली
verbal and non-verbal communication is the basic two type. तो verbal में शाब्दिक में आप write up and the select of the word or select of the letter and make of sentence. So non-verbal communication, sign language, symbols used and codes used and colors used. So said that first is a sign, and then symbols and codes and colors. So that some important questions you are understand regarding classroom communication. So help your exam. Thank you all, everyone. Your so